Hello students, a very good morning to all of you. Today we are going to solving our worksheet number 2. So our first question is saying that is the 0 a rational number? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू? क्या हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं 0 को? वेयर द p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. So what will be the its solution? Question is asking to us is 0 is a rational number. क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्या हम 0 को रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? So let's do in our list. Now what we can say here that as what is the definition of the rational number? We know that the rational number is a number which can be represented in form of p by q. Correct? Where first condition is p and q should be integer and our second condition is that q should not be equals to 0. Okay, now if these two conditions will get satisfied for the 0, then we can say that this 0 is an rational number. करेक्ट? अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है 0 के लिए तो हम क्या कह सकते हैं तो 0 जो है वो रेशनल नंबर है. करेक्ट? नाउ how can we say that 0 is a rational number? See, if I took a 0, a number, if I suppose if I took a number 0 and if I write in denominator that is an 1, okay, here if I write 0 divided by 2, here if I write 0 divided by 3, here if I write 0 divided by 4 and so on. So here the 0 is our what? Numerator, and here the integers which we are writing under at the denominator, they are our denominators. Now if we divide the 0 by 1, if we divide any number, if we divide 0 by any number, then what the result we will get? We get always 0, क्योंकि 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे आंसर हमें वापस 0 ही मिलना है. करेक्ट? सो और 0 हमें मालूम है 0 क्या है? एक इंटीजर नंबर है. एज वी नो दैट द 0 इज एन इंटीजर नंबर. सो व्हाट वी कैन से, if we solve this number, what we get? 0. On solving this number it will be also 0. On solving this number we will get 0. On solving this rational number we will get 0. So 0 is an our integer number, this is an our integer number, and here 0 is also an integer and here 1 is also an integer, and our the q is not equals to 0 because this belongs to the q and this belongs to the p. Okay, here our numerator belongs to the p and the q and the denominator belongs to the q. Okay, so on the dividing 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3, 0 by 4, 0 by any number, we will get the result 0, and the 0 is an integer number. So we can say that it satisfies our both conditions. So 0 satisfies our both above conditions. Okay, so what we write? Yes, 0 is a rational number. Correct? Now our second questions come here that find the 6 rational numbers between 3 and 4. क्वेश्चन में तुम्हें दिया गया है कि 3 और 4, 3 and 4, there are the two numbers, two integer numbers, and you need to find it out the 6 rational numbers in between these two numbers. Okay, so what we will do, there are simple steps we need to follow. What we need to do, suppose and now here as the two numbers are given to us, that is 3 and 4. Correct? So first take these two numbers and we need to find it out in between 6 numbers, rational numbers 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
we need to find it out 6 rational numbers in between these two numbers. So what we will do here as the number of rational numbers need to find is equals to n is equals to 6, क्योंकि हमें कितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है उसे हमने n माना है एंड that is 6. Okay, now what we do here, our first number, this one is our first and this one is our number. Okay, so what we do here, multiply this 3, multiply and divide both starting and ending number by n plus 1. So here we can write that the 3 multiply with n plus 1, that means here the n is 6 and we need to add 1 in this. So what we will get here, 6 plus 1. So it will be 6 plus 1 and dividing it by 6 plus 1. So and our last ending number is 4. Here we do the same thing. Here also we will multiply and divide by the same number, that is n plus 1, that is 6 plus 1, and also dividing by 6 plus 1. So here 3 multiplying with 6 plus 1, that means 7, dividing by 7, and here we are having 4, 7 dividing by 7. So on multiplying both these numbers, what we will get here, 7 3s are 21 divided by 7, and here we get 7 4s are 28 divided by 7. Now we need to find it out the 6 numbers in between these, correct? So what we will do here, just do the increment. Here we having 21. देखो यहाँ पे डिनोमीटर वैल्यू दोनों का सेम है हमारे पास, 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी, बट न्यूमेटर वैल्यू अब हमें चेंजेस करना है यहाँ पे. सो यहाँ हमारे पास 21 है एंड हियर वी हैविंग एन स्टार्टिंग पॉइंट is the value of numerator is 21 and here the ending numbers numerator value is 28. So we need to exceed the numerator value by 1. Okay, हमें न्यूमेटर वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना है. सो हियर द फर्स्ट टर्म वी हैविंग हियर 21 by 7, so we can write 21 plus 1, what we will get here, 22. So here will be 22 by 7. Again 22 में plus 1 इंक्रीमेंट करेंगे, what we will get here, 23 by 7. Again इंक्रीमेंट 24 by 7, then 25 by 7, then 26 by 7, then 27 by 7. So all these we having here 6 rational numbers in between the two rational numbers which is given to us. So this is our answer. Okay, similarly you can do this question, find the 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. What we will do here, we need to find it out 5 rational numbers in between both these numbers. So what we will do here, we will multiply n plus 1. Here the value of n is what, 5. Here the value of n is 5. So what we will do here, multiply both the side by the n plus 1, and here also 4 by 5 multiply with n plus 1. So n plus 1 is what, 3 by 5 multiply with 6, and here 4 by 5 multiply with 6. So 6 is 18 by 5, and here we having 24 by 5. And now we can do the increment in these numerator values from the first number to the last number. So we can write here that the 18, after 18 by 3 we can write 19 by 5, then 20 by 5, then 21 by 5, then 22 by 5, then 23 by 5, then 24 by 5. Okay, so here all the numbers in between which we need to find it out the 5 rational numbers. Okay, like this we can solve all the questions. Now our next third question is saying that state whether the following statements are true or false, give the reasons for your answers. Is every natural number is a whole number? क्या सारे natural numbers whole numbers होते हैं? देखो, what are the natural numbers? What are the our natural numbers? Natural numbers कौन से होते हैं हमारे? और natural numbers which are starting from 1 2 3,
1 2 3 4 5 and so on. And what are the whole numbers? Whole numbers are the numbers which are starting from 0 1 2 3 4 5 and so on. The question is saying that every natural number, क्या सारे natural numbers whole number होते हैं? देखो सारे natural numbers क्या है, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 क्या अवेलेबल है होल नंबर्स के अंदर? हाँ अवेलेबल है 1 2 3 4. सो वी कैन से दैट एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, सो इट इज़ अ ट्रू. ओके. सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? एवरी इंटीजर. सो फर्स्ट विल राइट हियर इंटीजर्स. व्हाट आर द इंटीजर नंबर्स? वी न्यू दैट इंटीजर नंबर्स आर ऑल द नंबर्स, all the negative numbers, 0 and the positive numbers, correct? So here we can say the integers number are the, if I say example -3 -2 -1 0 1 2 3 and so on, that means all the positive numbers, all we can say all the, these are the whole numbers, these are the whole numbers, we can say these are the whole numbers, and all these are the negative numbers. Okay, and all these are the negative numbers. Okay, so and our whole number is, and what whole numbers क्या होते हैं हमारे? whole numbers होते हैं 0 1 2 3 4 and so on. तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट क्या एवरी इंटीजर मीन्स सारे इंटीजर्स, ये जो सारे इंटीजर्स है, क्या इंटीजर्स सारे के सारे मिलके होल नंबर्स बनते हैं? नहीं, इंटीजर्स के अंदर तो होल नंबर्स होते हैं. ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट द होल नंबर, क्योंकि इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. क्या और क्या नेगेटिव नंबर्स होते हैं होल नंबर में? नहीं ना. सो वी कैन से दिस इज़ फॉल्स, बिकॉज एवरी होल नंबर कैन बी इंटीजर्स. Every whole numbers are integer, but every integer number is not the whole number. So what we say here? False. Okay, क्योंकि इंटीजर नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, वो होल नंबर्स में नहीं होते हैं. इज़ एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं? इज़ एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर. देखो रेशनल नंबर्स हम किसे कहते हैं? Rational numbers are the numbers which can be represented in the p by q. If I write 2 by 3, क्या 2 by 3 होल नंबर के अंदर अवेलेबल है? फाइंड इट आउट. होल नंबर्स क्या है? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. क्या इस 2 by 3 इज़ अवेलेबल इन दिस होल नंबर? एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर. क्या ये 2 by 3 रेशनल नंबर होल नंबर में अवेलेबल है? कहीं पर भी 2 by 3 लिखा हुआ है होल नंबर में? नहीं ना. सो वी कैन से नो, every rational numbers is not the whole number, so it will be false. Fourth question is saying that every irrational number is a real number. क्या सारे irrational number जो है वो real number होते हैं? देखो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वी हैविंग ड्रॉ अ ग्राफ दैट रियल नंबर्स के अंडर में ही क्या आते हैं हमारे पास? रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स. ओके, that means all irrational numbers are the real numbers and all rational numbers are also be the real numbers. It means all the irrational numbers are real numbers and all rational numbers are also real numbers, so it will be true. Every real number is an irrational number. Is every real number is an irrational number? क्या सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं? नहीं, क्योंकि रियल नंबर्स तो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स के अंदर, क्या? रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. सो वी कांट से दैट द एवरी ऑल रियल नंबर्स आर द इरेशनल नंबर, बिकॉज सम पार्ट ऑफ द रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर एंड सम पार्ट ऑफ द रियल नंबर्स आर द इरेशनल नंबर. सो इट विल बी द फॉल्स. Now question number 4 is saying that are the square roots of all the positive integers irrational? What the question is saying that are the square root of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. Okay, suppose क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्या सारे आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या वो इरेशनल होते हैं? तो हियर इफ यू टेक एग्जाम्पल रूट 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रूट 4? रूट 4 इज 2. दिस इज एन रेशनल नंबर.
if I say root 9, it will be 3. This is again a rational number, so we can't say that. So all positive square roots are not irrational number, बिकॉज रूट 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूँगा तो मुझे 2 मिल जाएगा, और 2 क्या एक रेशनल नंबर है, क्या 2 इरेशनल नंबर है? तो सो द क्वेश्चन हमें कह रहा था कि सारे स्क्वायर रूट नंबर्स जो होते हैं ना, क्या वह इरेशनल नंबर होते हैं? नो, बिकॉज वी हैव शोन हियर द एग्जाम्पल दैट रूट 4 इज अ रेशनल नंबर, बिकॉज वी गेट हियर रिजल्ट 2. रूट 9 इज 3 is a rational number. If we do root 16, that is the result is 4, so that is also a rational number. So here we completed our worksheet number 2. Do it yourself first, try to solve yourself. If you not get understand, then take a reference from this video and then solve the questions. Okay, thank you.